Hi guys, today our topic is arrhythmia. What is the definition of arrhythmia? Arrhythmia is irregular heartbeat, a disturbance in the regular heartbeat. नज्म के साथ एक तरीके के साथ जो रिदमिकल होती हैं हार्ट बीट, लेकिन अरिथमिया में क्या होती है, ये नॉर्मल हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसे हम दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो मोनोटोन सॉरी नॉर्मोटोपिक और दूसरी एक टॉपिक। नॉर्मोटॉपिक एरिथमियास क्या हो सकते हैं? नॉर्मोटॉपिक एरिथमियास को फिर हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। साइनस एरिथमिया होता है, साइनस ट्रैकिकार्डिया एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया। एज द नेम शोज दैट साइनस एरिथमिया is a respiratory arrhythmia. Sinus arrhythmia is a normal arrhythmical increase or decrease in heart rate in relation to respiration. रिस्पायरेशन से जो रिलेटेड अरिथमिया है उसे क्या कहा जाता है? साइनस रिस्पायरेशन। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रिस्पायरेटरी साइनस अरिथमिया। As the normal heartbeat is 92 per minute, however, under the physiological condition, normal healthy person heart rate varies according to the phases of the respiratory cycle. ECG change क्या होता है साइनस अरिथमिया के दौरान? ड्यूरिंग द साइनस अरिथमियास देयर इज अ difference in only R to R intervals which may shortening during inspiration and prolong during expiration. काजेस क्या हैं, क्या वजह है इस अरिथमिया के? काजेस जो हैं, साइनस अरिथमिया ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द डिस्चार्ज ऑफ द इम्पल्सेस फ्रॉम द एसए नोड। एसए नोड से जो इम्पल्स जनरेट हो रही हैं उनमें फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। दैट्स वाई इट लीड टू साइनस अरिथमिया। साइनस ट्रैकिकार्डिया क्या है? साइनस ट्रैकिकार्डिया एज द नेम शोज, ट्रैकिकार्डिया मीन्स हाई heartbeat. Sinus tachycardia is increase in discharge of the impulses from SA node, resulting in increase in heart rate. Discharge of the impulse from the SA node is very rapid and there is heart rate increases up to 100 per minute, sometimes 150 per minute. ECG change during the sinus tachycardia. ECG is normal, but except the shortened R to R intervals become short and heart rate become increase. Condition of the sinus tachycardia. Physiological conditions are exercise, emotion, high altitude, pregnancy. यानी इन वजूहात में क्या होता है, ट्रैकिकार्डिया हो सकता है जब एक्सरसाइज की जा रही हो, इमोशनल हो या ऊंचाई पर चले गए हो या प्रेगनेंसी हो, इस सूरत में। हाँ जी, पैथोलॉजिकल कुछ इसकी बीमारियों की वजह भी हो सकता है। बीमारी में भी हाई हार्ट बीट हो सकती है, जैसे कि फीवर, एनीमिया, थायरॉइडिज्म, हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथी, वल्वुलर हार्ट डिजीज एंड हेमोरेजिक शॉक. And features of the sinus tachycardia: palpitations, you can feel your own heartbeat; dizziness, fainting, shortness of breath, chest discomfort. Now, what is sinus tachycardia? Sinus tachycardia is the reduction in the discharge of the impulses from the SO node, resulting in decrease in heartbeat. It may decrease up to 60 per minute. Changed in ACG during bradycardia, sinus bradycardia. There is a prolonged R to R interval. Condition during sinus tachycardia. Sinus tachycardia is observed during sleep, and it also see in some athletic heart. Pathological causes for sinus bradycardia are disease of the SA node and hypothalassemia, hypothermia, hypothyroidism, heart attack, congenital heart disease, congenitive process of the aging, obstructive jaundice, and antiarrhythmic drugs may cause erythrosclerosis, and this is known as carotid sinus syndrome. फीचर्स क्या है साइनस ब्रेडिकार्डिया के?
स्किन साइनस सिंड्रोम हो सकता है, फटीग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लैक ऑफ द कंसंट्रेशन एंड डिफिकल्टी इन एक्सरसाइज भी हो सकती है। पहला अरिथमिया तो हो गया जिसे हम नॉर्टोपिक अरिथमिया कहते हैं, और इसमें हमने 3 टाइप्स देखे हैं नॉर्टोपिक अरिथमिया की। साइनस अरिथमिया देखा है, साइनस ट्रैकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। नाउ एक्टोपिक अरिथमिया क्या है? Ectopic arrhythmia is the abnormal heartbeat in which one of the structure of the heart than the other than the SA node becomes the pacemaker. Pacemaker जो आपके हार्ट का है वो SA नोड है, लेकिन यहाँ पे जो SA नोड है वो सही से काम नहीं कर पाता, तो इसकी जगह पर कोई भी पार्ट जो है वो क्या बन जाता है, पीस मेकर बन जाता है। इम्पल्सेस प्रोड्यूस